Hello everyone, how are you all? I hope you are all good. So students, in this video we will be discussing important current affairs for 7th of October. The session will be quite interesting and important, so stay tuned with us till the end. In this video students, we are talking about Prime Minister Narendra Modi, who has unveiled multiple youth focused initiatives. Then we will be talking about a $100 billion investment commitment and a $1 million direct jobs that will be coming into the market, right? We will be discussing about this investment. Then we are talking about India's first cooperative multi-feed CBG and potash granule project that is setting up in Maharashtra. Then we will be talking about recovery and reconstruction projects worth 4600 crore rupees across 9 states. All these things and many more will be discussed here, so stay tuned with us till the end. Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will get daily, weekly, monthly content on regular basis. Use the code VIKAS10 and get 10% additional discount while purchasing the course. Also students, follow us on Telegram and Instagram. The link for the same are mentioned in our description. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description below. Let's start with national affairs students. Prime Minister Narendra Modi, he has unveiled multiple youth-focused initiatives worth over 62,000 crore rupees from Delhi. See, first thing students, try to understand that our country is a young nation, right? We have more young population, and as we have more young population, we need to provide jobs to these population. Even there was a report recently released by Goldman Sachs that stated that India needs to grow twice as fast in order to meet the job requirements for the youth. Right. So coming back to this news, PM Modi has unveiled youth-focused initiatives that are worth 62,000 crore rupees at Vigyan Bhavan in New Delhi. This program, if we see, featured the Kaushal Dikshant Samaroh facilitating 46 All India ITI under the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship. Also, PM Modi has launched PM Setu, that is Pradhan Mantri Skilling and Employability Transformation through upgraded ITIs, that is a central sector scheme with an investment of 60,000 crore rupees. Here skill labs, also remember, skill labs will be inaugurated, and Prime Minister Narendra Modi inaugurated 1200 vocational skill labs that are established in 400 Navodaya Vidyalayas and 200 Eklavya model residential schools across 34 states and union territories. These labs, these skill labs, they will equip students, including those in remote and tribal areas, and that will be providing hands-on training. Right, that is the practical knowledge. Hands-on skilling trainings will be provided. Also, this project involves training of 1200 vocational teachers to deliver the industry relevant skills that are needed for these individuals, for these youths to become job ready. Right, so take a note of this, and these are the exam hints that we just discussed. Apart from this, students, remember Paryatan Didi or Paryatan Mitra. Right, this is to promote tourism across India, and it was launched by the Ministry of Tourism. Then apart from this, if we are talking about green mobility, it is Odisha state that has secured the 5th position in green mobility, and the target here of Odisha is to launch 1000 plus green buses, green electric buses in the coming years. Right, next, here we just saw PM Setu students, right? And then apart from this, if we talk about empowerment schemes in Bihar, you see Mukhyamantri Nishchay Swayam Sahayata Bhatta Yojana, then student credit scheme, then Bihar Yuva Ayog. These are the some schemes that are promoting youth employment, youth skilling, empowerment of youth in Bihar. Next is India EFTA TEPA came into force. First of all, what is this India EFTA? EFTA is your European Free Trade Association. What is TEPA? TEPA is your Trade and Economic Partnership Agreement. So recently India and EFTA, that is your European Free Trade Association, they have recently signed an agreement, and this EFTA, it comprises of countries such as Switzerland, Norway, Iceland, Liechtenstein, right? And this TEPA, that is Trade and Economic Partnership Agreement between these two, came into force on 1st of October, right? And this summit is basically a free trade agreement
here, and India's free trade agreement with these four developed nations, that are your Switzerland, Norway, Iceland, and Liechtenstein. Correct. This EFTA, they have pledged to attract foreign direct investment worth $100 billion in India in the next 15 years. Also, the target here is that they will be generating almost 1 million direct jobs in India through such initiatives. And as it is a free trade agreement, you will be seeing that the trade between these countries will be flourishing, right? It will be good for the market, as there will be no tariffs on the goods that will be exported or imported between these countries. Here you will be seeing that focus will be on enhancing together, right, or growing together. Right, students? Next you can see TEPA between India and EFTA came into force on 1st of October, where at the Prosperity Summit that was held in New Delhi, that was organized by the Ministry of Commerce and Industry. These are the EFTA member countries here, and it is India's first free trade agreement with 4 developed European nations. These are the developed nations. Here, free trade between India and 4 developed European countries. It was signed in March 2024 and came into force on 1st of October 2025. Correct. Next remember DPIIT, they have partnered with Pfizer, right, and it is to support the medtech startups, correct. Then apart from this, our country India, we have also launched first ever vulture conservation portal, or a network also, right, to safeguard the vulture, that is an endangered species. Next, Amit Shah, our Home Minister, has inaugurated India's first cooperative multi-feed CBG. First of all, what is this CBG? It is your compressed biogas plant, and as well as a potash granule project in Maharashtra. So India's first cooperative multi-fed compressed biogas plant and potash granule project, where they were inaugurated in Maharashtra. This move, it aligns with the initiative of the government of India, such as Waste to Wealth and Atmanirbhar Bharat. This will be supporting the cooperative development corporations. Here you will be seeing a budget outlay of 55 crore rupees, where in Maharashtra. And here, if we talk about this compressed biogas plant CBG, it has a capacity of 12 tons, right, and for potash granule project, it is 75 tons of capacity, right, students? You can see here. Then next thing is, remember, 2 statues has been also unveiled here, right? Which are these statues? These statues are of Padma Shri awardee Dr. Vittal Rao Eknath Rao Vikhe Patil and his son Padma Bhushan awardee Balasaheb Vikhe Patil, right? So for both of them, here the statue has been unveiled. Important, correct? Then apart from this, students, remember, if we are talking about the Global Peace Index, it is Iceland that has secured the first position, and our country India stands on 115th position in this Global Peace Index, and it is out of 163 nations. Next is, government has approved the mitigation, recovery and reconstruction projects worth 4,600 crore rupees across 9 states. Right, so a high-level committee chaired by Union Minister Amit Shah has approved the number of mitigation, recovery and reconstruction projects worth 4,600 crore rupees approximately for 9 states, and this project will be financed through the National Disaster Mitigation Fund, that is NDMF fund. And here, as this shows that the government is committing towards the disaster relief, correct. Also here, flood mitigation project has also been approved in the state of Assam worth 200 crore rupees, out of which 180 crore rupees will be given by the state government, and rest 20 crore rupees will be given by the state government. Right, let me show you a detailed answer here, students. First approval is for the restoration and regeneration of the wetlands in Assam worth 692 crore rupees. Then second approval is for the phase 2 of the urban flood risk management program, and here the budget area is of almost 2,444 crore rupees. Approval 3 is a flood mitigation project in Guwahati, Assam worth 180 crore rupees. Total is 200 crore rupees. 180 crore rupees will be given by center, and 20 crore rupees will be granted by the state. Next is India and UK bilateral maritime exercise Konkan 2025 has commenced off India's western coast. I repeat, India and UK, that is Indian Navy. If we talk about this Konkan exercise, it was held between Indian Navy and Royal Navy of UK. This exercise, Konkan exercise, was held where at India's western
coast, right? And this exercise was held from 5th to 12th of October. Correct? It was held in two phases, that is the harbor phase and the sea phase. And this 2025 edition marks the first time India and UK have deployed their full career strike groups for a joint maritime exercise. If we talk about from India who took part, so from India it is INS Vikrant that took part in this exercise, and from UK it is HMS Prince of Wales that took part in this exercise, right? Take a note of it. Then, okay, one more thing. Where was the SEO summit for 2025 held? It was held in Tianjin, China, and PM Modi took part in it. The next is BRO, that is Border Road Organization. They have built the world's highest motorable roads at 19,400 square feet in Ladakh, right? This is the world's highest motorable road at the Migla Pass. La means pass only, students. Just remember that, right? It is near the line of actual control. And here, this is a Guinness World Record that has been set here, correct? Recently by the Border Road Organization. Apart from this, if we talk about the 18th edition of the Inclusion International World Congress, it was held where? It was held at the Sharjah. Sharjah hosted it. Then Geo Payments Bank, they plans India's first auto investing saving account, right? Apart from this, recently India Post Payments Bank, they have marked the 8th Foundation Day, and it was on 1st of September 2025. Next is TEC. What is TEC? Telecommunication Engineering Center. They have recently signed an MOU with IIIT Naya Raipur to advance next generation telecom technologies. I repeat, TEC under the Department of Telecommunication has signed a memorandum of understanding with IIIT Nava Raipur of Chhattisgarh to jointly pursue research, innovation and standardization in the next generation telecommunication technologies, right? This partnership, what it will do is it will promote the 5G 6G internet speed framework, right? This will make sure that these technologies become affordable after research and development, and it can be provided to the large population in India. Also, this collaboration aligns with India's vision of Atmanirbhar Bharat that will foster indigenous research, design and development in the telecom technologies. Apart from this, remember students, recently in the month of August, the UPI transaction has crossed the 20 billion mark. Also, India Bonds, they have partnered with Upstocks to boost the retail participation in the bond segment. Also, if we talk about India's rupee denominated bonds will now be listed by BRICS. Another interesting and important news. Next is Union Finance Minister Nirmala Sitharaman ma'am. She has launched the nationwide Aapki Punji Aapka Adhikar campaign in the Gujarat state. So direct question can be asked that Aapki Punji Aapka Adhikar campaign was launched in which state? It was launched in Gujarat state, and this is to settle the unclaimed financial assets. For the settling of the unclaimed financial assets, right? This will ensure wider participation, and the campaign will be conducted across all states and union territories from October to December 2025. But in Gujarat, the name of the campaign was Aapki Punji Aapka Adhikar campaign. Next is awards and recognition, students. Shimon Sakaguchi, Mary E. Burkno and Fred Ramsdell, they have won the Nobel Prize in Physiology or Medicine 2025. You can see them here, right? These three individuals, they have won the award here recently, right? They are recognized for their discoveries concerning the peripheral immune tolerance that prevents the immune system from harming the body. If we see here, these are the three scientists, Nobel laureate. They were awarded with the Nobel Prize in Physiology, and it is for discovering concerning peripheral immune tolerance that prevents the immune system from harming the body. Moving on, students, if we talk about peacemakers, right? Indian peacemakers are awarded for dedicated services by UNISFA, right? What is UNISFA? It is your United Nations Interim Security Force for ABI, that is a contested oil-rich border region between Sudan and South Sudan, right? So Indian peacemakers, they were honored here for their dedicated services. Take a note of this. Direct question can be asked.
Here you can see the contribution. It includes military observers, staff officials, reflecting India's unwavering commitment to global peace and security. Also, India remains the largest contributor towards the UN peacekeeping missions globally, with over 5,000 troops that are currently serving there. Then, apart from this, students, tell me who has been elected as the chairman of PTI board. So, Mahendra Mohan has been appointed here. Who has been appointed as the new Controller General of Accounts? A. Kalyani. Next is appointments and resignation, students. Next is Group Captain Subhanshu Shukla appointed as the ambassador of Viksit Bharat Buildathon. Right? So first Indian to reach the International Space Station, that is Subhanshu Shukla, was appointed as the brand ambassador for the Viksit Bharat Buildathon, that is a nationwide innovation initiative by the Ministry of Education that is aimed at engaging students from class 6 to 12. This is the largest ever school hackathon that is engaging more than 1 crore students from 1.5 lakh schools that will be creating prototypes across 4 themes. Right? And here Subhanshu Shukla, remember, he's a 39-year-old Indian Air Force officer and a test pilot. And he went on Axiom 4 mission to International Space Station. Next is Science and Technology. Goa Shipyard Limited's FPV ICGS Akshar officially commissioned at the Karaknal, Puducherry. So multiple question. GSL, Goa Shipyard Limited, FPV, that is your fast petrol vessels, ICGS, Indian Coast Guard ship, and this Goa Shipyard Limited's fast petrol vessels name is ICGS, that is Indian Coast Guard ship Akshar. It was commissioned where? It was commissioned in Puducherry. Very important, students, take a note of it, direct question can be asked. And this is the second of the 8 Adamya class fast petrol vessels series that has been delivered here. It contains over 60% indigenous contents. Hence, we can say it is made in India. If any product is having more than 50% indigenous content, then only it will be considered as made in India. Correct? If we talk about Indian Coast Guard, students, who is the Director General of Indian Coast Guard? Paramesh Shivamani. Right? Take a note of this. Then who has been appointed as the non-executive chairman of Yes Bank? Non-executive chairman of Yes Bank, Gandhi. Right? Then who has been appointed as India's new ambassador to UAE? So Deepak Mittal. Deepak Mittal appointed as the new ambassador to India's new ambassador to UAE. Next is India has claimed 8 gold medals at the ISSF Junior World Cup 2025 that was held in New Delhi. Right? So out of these 8 gold medals, first thing remember here, who finished the top position in the medal tally? It is our India that secured the top position in the medal tally. First position in the medal tally with a total of 26 medals. Out of these 26, 8 are gold medals. Right? Take a note of this. Right? It is your ISSF Junior World Cup. That is the second stage where in New Delhi it was held from 24th of September to 2nd of October. 208 shooters from 19 federations took part here, and our country India secured the top position with 28 medals, including 8 gold. Right? Here you can see India first, individual neutral athlete second, Italy third, China fourth, Czech Republic fifth. Next, our country hosted the 12th edition of the World Para Athletics Championship that was also held where? It was held in New Delhi. It was from 27th of September to 5th of October. Right? And our country became the first South Asian country to host the prestigious championship. This was the 12th edition of this World Para Athletics Championship. The previous edition, that is the 11th edition, was held in Japan. Correct? Who secured the top position in the medal tally here? It is Brazil that secured the first position in the medal tally with 44 medals. China second. India secured the 10th position here with 22 medals. Next is important days. PFRDA, they have celebrated the NPS Divas 2025 to strengthen the retirement security in India. Right? In order to promote the retirement security so that the people have right pension throughout their life even when they get retired. So for promoting this, they observed this NPS Divas. It was celebrated by PFRDA, that is your Pension Fund Regulatory and Development Authority. It was held under the theme, which is important and you need to remember, inclusive pensions, innovative solutions, strengthening retirement security in India. This is the theme under which this was held.
Next is World Teachers Day. We observe this day on 5th of October, and this day is observed basically to raise awareness about the role of teachers in promoting education and shaping the future generation, right? And understand, this is not your National Teachers Day, it is your World Teachers Day, which is observed on 5th of October. It is observed by UNESCO, right? What is the theme here? Recasting teacher as a collaborative profession. This is the theme here. And Teachers Day in India, that is your National Teachers Day, observed on 15th of September, right? Take a note of it. Then next is World Cerebral Palsy Day. It is observed on 6th of October, and this day is observed basically to raise awareness and celebrate the achievements of individuals that are living with the cerebral palsy, and it is to advocate for their inclusive rights and the problems that they are facing globally. Correct? This day was first observed in 2012, and the theme here is unique and united. Next is state news, students. Union Minister Amit Shah, who is our Home Minister, has launched Majhe Ghar Yojana. It is to grant the ownership rights to the residents, right? Take a note of this, students. What we are talking about, Majhe Ghar Yojana scheme, launched by Amit Shah. This is the scheme that was launched by the Goa's government, right? And there Amit Shah inaugurated this scheme, right? There's this Majhe Ghar Yojana. What does this mean? Is it is my home scheme, my home scheme, right? This was held at the Dr. Shyama Prasad Mukherjee Indoor Stadium in Goa. And who is the Chief Minister of Goa? Pramod Sawant. Correct? It is to provide the full ownership right to the residents. Right, students? So now let's move to some revision part that will be quite beneficial for you all. SAP Labs India, they have signed a memorandum of understanding with Gati Shakti Vishwavidyalaya that will digitally upskill the professionals in the logistics and transport sector during the inauguration of the Innovation Park in Bengaluru, Karnataka. So in the logistics sector, right, their skilling will be done. All the professionals will be skilled here. They will be taught about the new technologies, new initiatives that are coming in the market, that how can we use them and how can we incorporate them and how we can use them in enhancing the logistics sector. Take a note of this. This is important, right? Here, industry related research and development and employment to boost the national logistics capabilities will be taken into consideration. Next, India, they have signed a protocol with Russia, and it is to strengthen the cooperation in sectors such as aluminium, fertilizers, railway transport, mining. It was signed during the 11th session of the Working Group on the Modernization and Industrial Cooperation that was held in New Delhi. Next, AIM, that is Atal Innovation Mission, it is of Niti Aayog. They have signed a Statement of Intent SOI with whom it was signed with Digital India Bhashini Division, and it is to foster vernacular innovation and enhance the Indian language inclusivity in the innovation ecosystem, right? Take a note of this. This will focus on the strategies to integrate Indian language technology into Atal Innovation Mission nationwide program. This is the content from the World Intellectual Property Organization Academy on the intellectual property rights will be translated into the multiple Indian languages. If you remember Bhashini, what is this? What is the basic aim of this Bhashini initiative, right? It is a large language model company. What they are doing is they are providing multilingual support because India has a large language base, right? So they are providing multilingual support here so that large languages, multiple languages can be catered. Next, identify the telecom company that collaborated with global tech giants Ericsson India, Qualcomm Technologies, Cisco Systems and Nokia Solutions in August to drive digital transformation and strengthen the skilling ecosystem in India. So identify the telecom company. It is Bharat Sanchar Nigam Limited, that is BSNL, right? MOU is important here, so take a note of this. Next, in August, Dash has signed a memorandum of understanding with Zepto. What is Zepto doing? Zepto is a food delivery platform, right? So they have launched Zepto Nova, that is an innovation challenge, the aim of which is to support the startups at the early stage in the manufacturing sector, right? So what they are doing is, we can say that Zepto is helping the manufacturing sectors to grow. They are helping the early stage startups in the manufacturing sector to grow. So which is that ministry or which is that organization? It is your Department of Industry and Internal Trade, DPIIT. They have partnered with Zepto here and they have launched an innovative challenge, that is Zepto Nova, where they will be helping the small startups, early stage startups in the manufacturing sector. Next, identify the research center that has signed an MOU in August with NLC India Limited for the extraction of rare earth materials or rare earth elements from
fly ash. So the fly ash, right, it is basically when we burn something, then with the help of those fly ash, they will be recycled, right? They will be treated properly, and important materials, important minerals, important elements will be taken out from them, right? This fly ash, basically it is the byproduct of the thermal power generation. When you are burning coal, the gases that are released, that is your fly ash, right? So from them we will be extracting the rare earth materials. So identify the research center that has signed this MOU with NLC India Limited. Which is that research institution? It is Baba Atomic Research Center, BARC. It is located where? It is located in Maharashtra. Next, mention the institute with which UIDAI, they have signed a 5-year umbrella agreement in August to collaborate on research and development for bolstering the security and reliability of Aadhaar. It is ISI, Indian Statistical Institute, ISI, right? Take a note of this. So mention that institute. ISI is the institute with which UIDAI, they have signed a 5-year umbrella agreement, and focus here will be on boosting research and development for the security and reliability of the Aadhaar card. Aadhaar card, it is a 12-digit number which is unique for every individual. This was launched in 2009 by the government of India. Next, mention the organization that signed a 3-year memorandum of understanding with My Bharat under the Department of Youth Affairs in August to promote youth leadership development in India. It is School of Ultimate Leadership Foundation, that is SOUL. So My Bharat under the Department of Youth Affairs, they have signed this 3 memorandum of understanding with the School Ultimate Leadership Foundation, SOUL, right? And it is to advance youth leadership across India, promote youth leaders across India. The collaboration aims to develop 1 lakh youth leaders that are between the age of 18 to 29 years of age nationwide, where they will be skilled in the governance, public policy, entrepreneurship, digital literacy, financial literacy, and many more. Next, which of the following institute has collaborated with Birbal Sahani Institute of Paleo Sciences in August to establish a unified platform for showcasing India's scientific and cultural development? So, which of the following institute collaborated here? It is Indira Gandhi National Center for Arts. They have collaborated with Birbal Sahani Institute of Paleo Sciences. Next is in August, National Health Authority under the Ministry of Health and Family Welfare, they have collaborated with the Center for the Development of Advanced Computing, that is CDAC, to launch e-Shushruth@clinic, a lightweight cloud-based hospital management information system for OP, that is your outpatient clinics, right? And this system will represent a crucial expansion of the Ayushman Bharat Digital Mission. This Ayushman Bharat Digital Mission was launched in September 2021, and it is basically to create a digital health ecosystem in India. Moving on, identify the institute that has signed a licensing agreement worth 1 crore rupees with Indraka Quantum Technologies Private Limited to transfer India's first indigenously developed silicon photonics based high-speed quantum random number generator technology to industry for commercial deployment. So identify that institute. It is IIT Madras, right? And this agreement, it is expected to play a very important role in bolstering India's quantum innovation ecosystem. Next, mention the paramilitary forces that have signed this MOU with IIT Manipur in August to promote drone technology for defense and security. It is Assam Rifles. Take a note of this. This MOU will enhance technical and operational readiness of the personnel, particularly in the areas such as surveillance, reconnaissance, and logistic supports in challenging the terrains. Next, identify that Indian institute that in collaboration with FedEx has launched FedEx Smart Center at their campus in August to develop AI-driven logistics solutions, right? So which is that IIT? It is IIT Madras. Option 1 is right here. The first of its kind facility will be supported by a 5-year contract, and here $5 million will be utilized here, correct? And this $5 million, if we talk about it, this is close to 44 crore rupees. It will be given by FedEx. Next, which American satellite internet provider collaborated with UIDAI to enable Aadhaar-based customer verification? It is Starlink Satellite. Important question. We have done this multiple times, students. Next, on 21st of August, Department of Empowerment of Persons with Disability, they have partnered with whom? They have partnered with Nipman Foundation, and this was basically for young leaders, right? And to launch, or they have also partnered with
Basically, what is the aim of this launching, right? This was to promote Banking Barriers Fellowship, right? This Banking Barrier Fellowship, this is a program that has been designed to place young professionals across various Department of Persons with Disability offices to strengthen policy that will be helping the persons with disabilities, their rights, right? They will be provided with better facilities and how we can make their life easier. This will be the main focus of this particular thing. Next question is, mention that organization that signed a 5-year business-to-business agreement with Brahmaputra Valley Fertilizer Corporation Limited at Siliguri, West Bengal to supply essential fertilizers. It is National Seed Center of Bhutan. Important, this will be a business-to-business agreement, correct? And what will be the purpose here? This will guarantee the timely and uninterrupted access of the agriculture inputs. Right, this will support the Bhutan's food security and agriculture productivity goals. So means in Bhutan, regular supply of fertilizer goods will be provided that will ensure that there is no lack or there is no less supply of agriculture food there. Next, identify the telecom company that has signed this MOU with the Dow division of the Indian Army in August to enhance digital and mobile connectivity in the forward areas of the Dibang Valley and Anjar districts of Arunachal Pradesh. So identify the telecom company, it is Bharti Airtel, and it will also support the Digital India initiative that will enhance the security by enhancing seamless communication between the security forces in the forward area. Next, which organization has recently partnered with the Department of Post, correct? And it is to enable citizens in rural and semi-urban areas to invest in mutual funds through India Post during the 30th Foundation Day celebration in Maharashtra. So what is the main aim here? To promote investing in mutual funds, right? More and more investors should come here and invest in mutual funds. For this, which is that organization that has partnered with the Department of Post? It is your Association of Mutual Funds in India, that is AMFI. Next, identify the Central Armed Police Force with which Rashtriya Raksha University has signed an MOU in August to foster cooperation in training, research and academic development related to the national security. It is Shastra Seema Bal, right? SSB. This partnership will provide the trainees of the Shastra Seema Bal with exposure to cutting-edge academic and professional modules and enhance their preparedness to meet the evolving challenges of the internal security, border management and law enforcement. Next, Department of Food and Public Distribution under the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, they have signed a letter of intent. It was signed with whom? It was signed with the United Nations Development Program. I correct, not this. It is with United Nations Water Food Program this MOU was signed, and this is basically to strengthen the cooperation in addressing the global hunger. This initiative, right, and it is under your Vasudev Kutumbakam, the world is one family, correct? Also, the agreement here foresees a supply of almost 2 lakh metric tons of rice, right, in the areas for the next 5 years where global humanitarian aid is required. So, India will be supplying this 2 million tons of rice. Next, with which organization has launched India's first learning accelerator in August in collaboration with Indian Institute of Technology Madras, aimed at empowering the educators and students with AI tools and trainings? It is OpenAI, right? I repeat, OpenAI, right? An AI organization launched India's first learning accelerator in collaboration with IIT Madras. Right, students? So take a note of this. It is OpenAI. Who is the Chief Executive Officer of OpenAI? Sam Altman. Right? Next. Okay, one more thing here. Remember, OpenAI, they have also committed $500,000, approximately 4.5 crore rupees, to IIT Madras to conduct long-term research on the influence of AI on teaching practices, lecturing outcomes, right, and also cognition. Next, identify the organization with which the Department of Ex-Servicemen Welfare has signed a memorandum of understanding to improve the delivery of pension, healthcare, resettlement and welfare services for over 63 lakh military veterans and their dependents. So identify that organization. It is Quality Council of India. Next, mention the forum that collaborated with India AI Mission under the Ministry of Electronics and Information Technology to launch India AI in Action podcast series in August, aimed at highlighting AI-driven solutions by the Indian startups. Right? So this will be a podcast
right? It will be a series of multiple videos where two individuals will be sitting together, right? And they will be talking. This is a podcast where they will be talking about the use of AI in various industries, the challenges that AI will be bringing, and also how it will be beneficial in today's sector, in various sectors, or in today's generation in various sectors. So mention that forum that collaborated with India AI mission under Ministry of Electronics and Information and Technology to launch this India AI in Action podcast. It is your startup policy forum. Next, Satcom Industry Association India, they have signed a memorandum of understanding with whom? It was with Electronics Industry Association of the Philippines, and it is to deepen the cooperation in electronics, space and satellite communication technologies. Next, students, is our homework section and important questions, students. We have discussed these questions, so let's test your knowledge. First question, 5th edition of the World Tea Conference, it was held where? Second question, tell me recently what is the rank of India in the Global Innovation Index, and name that country that secured the first position also here. Third question, recently what is the fees of H1B visa for the new people, and it will be starting from which date? Then fourth question, tell me recently, if I ask you that who has been appointed as the next chairman of Coal India, or PESB recommended whom as the next chairman of Coal India Limited. And the fifth question that is important is, tell me who became the new BCCI president and who he will be succeeding. Name that individual also. So these are your homework questions, students. I need to see maximum participation from you all. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम 7 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मल्टीपल यूथ फोकस्ड इनिशिएटिव्स की, जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अनवेल किए गए हैं। देन हम बात करेंगे $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट की, एंड जो कि 1 मिलियन डायरेक्ट जॉब जनरेट करने का काम करेगा। इसी के अलावा अमित शाह के द्वारा इंडिया का पहला कोऑपरेटिव मल्टीफीड कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट को इनॉग्रेट किया गया, एंड पोटाश ग्रैन्यूल प्रोजेक्ट को कहाँ पे? महाराष्ट्र में। देन गवर्नमेंट ने अप्रूव किया मिटिगेशन, रिकवरी एंड रिकंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स को वर्थ 4600 करोड़ रुपीज अक्रॉस 9 स्टेट्स। ये सारी न्यूज एंड मैनी मोर हम डिस्कस करेंगे, तो एंड तक बने रहिएगा स्टूडेंट्स। काफी बेनिफिशियल सेशन रहेगा आप सभी के लिए। Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will get daily, weekly, monthly content on regular basis. Use the code Vikas10 and get 10% additional discount while purchasing the course. Also, students, follow us on Telegram and Instagram. The link for the same are mentioned in our description. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description below. स्टार्ट करते हैं नेशनल अफेयर्स से स्टूडेंट्स। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अभी अनवेल किया गया यूथ फोकस्ड इनिशिएटिव्स को। देखो, ये यूथ फोकस इनिशिएटिव्स बेसिकली एम क्या है इसका, कि हम कैसे इंडिया में जो यूथ हैं उनको स्किल कर सकें, राइट? अगर वो स्किल्ड होंगे तभी वो जॉब रेडी हो सकते हैं। अभी इवन गोल्डमैन सैक्स के द्वारा एक रिपोर्ट रिलीज की गई जो बताती है कि इंडिया को 2 टाइम्स फास्टर यहाँ पे ग्रोथ करनी होगी अगर वो सभी को जॉब्स प्रोवाइड कराना चाहते हैं। एआई आ गया, एआई से जॉब लॉसेस भी बहुत सारे हो रहे हैं, राइट? सो स्किलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टूडेज वर्ल्ड। तो इसीलिए यहाँ पे ये यूथ फोकस्ड इनिशिएटिव्स लॉन्च किए गए, जहाँ पे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी एंड इंडस्ट्री रेडी स्किल्स प्रोवाइड कराने का काम किया जाएगा। इसके लिए 62,000 करोड़ रुपए यहाँ पे एलोकेट किए गए हैं इस स्कीम को। पीएम मोदी के द्वारा ये स्कीम यहाँ पे लॉन्च की गई। यहीं पे देखें, ये जो प्रोग्राम है ये फीचर करता है कौशल दीक्षांत समारोह फैसिलिटेटिंग 46 ऑल इंडिया आईटीआई। पीएम मोदी ने पीएम सेतु को भी यहाँ पे लॉन्च किया, जो है प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड आईटीआई, जो कि एक सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 60,000 करोड़ रुपीज। इवन यहीं पे याद रखेंगे स्किल लैब्स ये यहाँ पे लॉन्च किया गया, इसको इनॉग्रेट किया गया। 1200 वोकेशनल स्किल लैब्स को स्टैब्लिश किया जाएगा 400 नवोदय विद्यालय में एंड 200 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स में, राइट? ये लैब्स स्टूडेंट्स को इक्विप करेंगी कि वो इवन रिमोट एरियाज में एंड ट्राइबल एरियाज में भी उनको जो हाई डिमांड स्किल्स हैं आज की जनरेशन की, वो उनको प्रोवाइड कराई जा सके, इंडस्ट्री रेलेवेंट स्किल्स प्रोवाइड कराई जा सके ताकि वो जॉब रेडी हो सके। ठीक है, इसी के अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पर आप ये स्कीम्स, ये वन लाइनर्स देख सकते हैं इससे रिलेटेड। इसके अलावा याद रखेंगे, अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए पर्यटन दीदी
एंड पर्यटन मित्रा, ये स्कीम लॉन्च करी ताकि टूरिज्म को प्रमोट किया जा सके अक्रॉस इंडिया। फिर इसी के अलावा याद रखेंगे आदिवानी, ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा लॉन्च किया गया था, इंडिया का पहला एआई पावर्ड ट्राइबल लैंग्वेज ट्रांसलेटर रहेगा। फिर इसी के अलावा इंडिया का पहला टेम्पर्ड ग्लास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, टेम्पर्ड ग्लास वो होता है जो आप अपने मोबाइल फोन पे प्रोटेक्शन के लिए लगाते हैं, राइट, उसकी एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इनॉग्रेट की कहाँ पे, नोएडा में। ये इंडिया की पहली टेम्पर्ड ग्लास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी रहेगी। फिर इसी के अलावा सेमिकॉन इंडिया, 4th एडिशन ऑफ सेमिकॉन इंडिया हमें देखने को मिला, कहाँ पर, यशोभूमि में हुआ ये, ठीक है। नेक्स्ट इसी के अलावा कपास किसान ऐप, कपास किसान ऐप को लॉन्च किया गया एंड ये कॉटन फार्मर्स के लिए लॉन्च की गई है किसान का कपास किसान ऐप। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है अभी इंडिया एंड ईएफटीए के अंदर 4 कंट्रीज आती हैं। कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, सिंगापुर, आइसलैंड, नॉर्वे एंड लिंचेस्टीन। ईएफटीए होता है यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। तो इंडिया एंड ईएफटीए कंट्रीज के बीच में ये टीईपीए साइन हुआ है, ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट। ये बेसिकली एक तरीके का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट रहेगा जो कि इंडिया ने इन 4 कंट्रीज के साथ साइन किया है एंड यहाँ पे $100 बिलियन इन कंट्रीज के द्वारा कमिट किया गया कि हम $100 बिलियन आने वाले 15 सालों में इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे, जिससे 1 मिलियन जॉब्स यहाँ पे जनरेट होती हुई हमें डायरेक्ट जॉब जनरेट होती हुई दिखेंगे इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। इससे क्या होगा, दोनों कंट्रीज के बीच में ट्रेड बढ़ेगा। इससे क्या होगा, जो नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उसमें 100% टैरिफ कंसेशन देखने को मिलेगा, करेक्ट। इवन इससे हम देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी क्योंकि अब एक्सपोर्ट हम बढ़ते हुए देखेंगे इन कंट्रीज में, करेक्ट। सो टेक अ नोट ऑफ इट। फिर इसके अलावा आ जाते हैं स्टूडेंट्स, अभी रिसेंटली हमने डीपीआईआईटी ने फाइजर के साथ पार्टनर किया मेडटेक स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए, राइट, मेडटेक स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए। फिर इंडिया के द्वारा इनका पहला वल्चर कंजर्वेशन पोर्टल लॉन्च किया, बेसिकली वल्चर कंजर्वेशन के ऊपर काम करने के लिए। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स, यूनियन मिनिस्टर अमित शाह जो कि हमारे होम मिनिस्टर हैं, इन्होंने इनॉग्रेट किया पहला कोऑपरेटिव मल्टीफीड कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट को एंड पोटैश ग्रेनुअल प्रोजेक्ट को महाराष्ट्र में। इंपॉर्टेंट है, मार्क करेंगे, आई रिपीट, अमित शाह हमारे होम मिनिस्टर, इन्होंने इनॉग्रेट किया इंडिया का पहला कोऑपरेटिव मल्टीफीड कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट। ये जो बायोगैस प्लांट रहेगा ये 12 टन का एनुअल प्रोडक्शन करेगा एंड पोटैश ग्रेनुअल प्रोजेक्ट की बात करें तो 75 टन यहाँ पे एनुअली प्रोडक्शन हमें देखने को मिलेगा, 75 टन पर डे एंड ये 12 टन पर डे ये आपका रहेगा, नॉट एनुअली, पर डे का रहेगा। यहाँ पर 55 करोड़ रुपए का यहाँ पे आउटले रहेगा, महाराष्ट्र में इसको लॉन्च किया गया है, करेक्ट। इंपॉर्टेंट है, मार्क करेंगे। एंड ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो इनिशिएटिव है वेस्ट टू वेल्थ एंड आत्मनिर्भर भारत, उसको प्रमोट करता हुआ दिखेगा। फिर इसी के अलावा स्टूडेंट्स मार्क करेंगे, अभी रिसेंटली पीटीआई बोर्ड के चेयरमैन कौन अपॉइंट किए गए हैं, महेंद्र मोहन, राइट। देन अगर हम बात करें कौन अपॉइंट किए गए हैं, एमडी एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ आदित्य बिरला कैपिटल 5 साल के लिए, कौन है वो है विशाखा मूल्य, ठीक। फिर आ जाते हैं किनको अपॉइंट किया गया, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ फसाई, सीईओ ऑफ FSSAI, कौन अपॉइंट किए गए हैं, वो है रजीत पुन्हानी, मार्क करेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है 2 स्टैचू और अनवेल किए गए हैं, यहीं पे याद रखेंगे, डॉक्टर विठलराव विखे पाटिल एंड बाला साहेब विखे पाटिल, इन दोनों के यहाँ पे स्टैचू अनवेल किए गए हैं, ये मार्क करके चलना। मूविंग ऑन, गवर्नमेंट ने अप्रूव किया मिटिगेशन रिकवरी एंड रिकंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स वर्थ 4600 करोड़ रुपीज अक्रॉस 9 स्टेट्स। टेक अ नोट ऑफ दिस, ये आपके नेशनल डिजास्टर मिटिगेशन फंड में यहाँ पे अलोकेट किए गए हैं, 4600 करोड़ रुपीज यहाँ पे अलोकेट किए गए हैं एंड यहाँ पे कई सारे प्रोजेक्ट्स देखने को हमें मिलेंगे जो कि हमारा फ्लड आ जाते हैं या फिर कोई भी नेचुरल डिजास्टर होता है, राइट, उस टाइम पे काफी बेनिफिशियल रहेंगे। ये एक हाई लेवल कमेटी थी जो कि अमित शाह के द्वारा चेयर की गई, उनके द्वारा ये प्रोजेक्ट्स यहाँ पर अप्रूव होते हुए दिखे हैं। पहला अप्रूवल अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं रिस्टोरेशन एंड रेजुविनेशन ऑफ वेटलैंड्स असम स्टेट में, आउटले ऑफ 692 करोड़ रुपीज। देन दूसरा आ जाता है आपका फेज 2 ऑफ द अर्बन फ्लड रिस्क मैनेजमेंट प्रोग्राम, ये 2440 करोड़ रुपीज का प्रोजेक्ट रहेगा। थर्ड अप्रूवल देखें तो फ्लड मिटिगेशन प्रोजेक्ट गुवाहाटी असम में रहेगा 180 करोड़ रुपए का, वैसे ये 200 करोड़ रुपए है, 180 करोड़ रुपए सेंटर देगी एंड 20 करोड़ रुपए स्टेट के द्वारा दिए जाएंगे। मूविंग ऑन, नेक्स्ट है
कोंकण एक्सरसाइज, ये 2 फेजेस में एक्सरसाइज हुई, हार्बर फेज एंड सी फेज में। ये इंडियन की वेस्टर्न कोस्ट पे एक्सरसाइज देखने को मिली। इंडियन नेवी एंड रॉयल नेवी ऑफ यूके के बीच में ये एक्सरसाइज हुई। इंडिया की तरफ से किस इंडियन नेवल शिप ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया, तो वो है INS विक्रांत। INS विक्रांत का पार्टिसिपेशन देखने को मिला। एंड यूके की तरफ से HMS हर मैजेस्टी शिप प्रिंस ऑफ वेल्स का पार्टिसिपेशन यहां पर हमें देखने को मिला, तो मार्क करेंगे। एंड 5 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक ये एक्सरसाइज हमें देखने को मिली थी। करेक्ट, मार्केट। फिर आ जाते हैं स्टूडेंट्स, BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने बिल्ड किया वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल रोड एट 19,400 फीट लद्दाख में। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड यहाँ पे बनाया गया है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है, BRO के द्वारा ये फीट अचीव यहाँ पे की गई है। देन यूके के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर कौन अपॉइंट किए गए हैं, वो है डेविड लेमी। डेविड लेमी। फिर इसी के अलावा वो पहला इंडियन ऑर्गेनाइजेशन कौन बना जिसने रेमन मैग्सेसे अवार्ड को जीता, राइट। फर्स्ट इंडियन ऑर्गेनाइजेशन वो है एजुकेट गर्ल्स, एजुकेट गर्ल्स, ठीक है। फिर इसी के द्वारा इंडिया के द्वारा हमारा पहला 32 बिट विक्रम माइक्रो प्रोसेसर को लॉन्च किया गया एट सेमिकॉन। क्या नाम रहेगा इसका, विक्रम। ये 32 बिट का माइक्रो प्रोसेसर रहेगा। नेक्स्ट एक और चीज याद रखेंगे, पेपुआ न्यू गिनिया के 50th इंडिपेंडेंस डे पे, राइट, किस इंडियन नेवल शिप ने ज्वाइन किया, पार्टिसिपेट किया, INS कदमत का यहाँ पे पार्टिसिपेशन देखने को मिला था एट द 50th इंडिपेंडेंस डे। फिर युद्ध अभ्यास हुई थी, ये युद्ध अभ्यास का 21st एडिशन हमें देखने को मिला था। इंडिया एंड USA के बीच में ये एक्सरसाइज हुई थी। लोकेशन क्या है, अलास्का में ये एक्सरसाइज हुई थी, अलास्का USA में। नेक्स्ट है TEC टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग सेंटर, ये आपका डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के अंडर आता है। इन्होंने एक MOU साइन किया IIIT नया रायपुर के साथ टू एडवांस द नेक्स्ट जनरेशन टेलीकॉम टेक्नोलॉजीज, राइट। ये बेसिकली क्या है, आने वाले टाइम के जैसे 5G 6G, राइट, इन टेक्नोलॉजीज के ऊपर काम करके जनरल पब्लिक तक पहुंचाने के लिए एंड इजिली अफोर्डेबल रेट पे ये पहुंच सके, इसके ऊपर यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके काम करने का ये एक MOU साइन किया गया, ठीक है। फिर इसी के अलावा मैत्री एक्सरसाइज याद रखेंगे, मैत्री एक्सरसाइज 14th एडिशन था मैत्री एक्सरसाइज का। इंडिया एंड थाईलैंड के बीच में ये एक्सरसाइज देखने को मिलेगी, मेघालय में ये एक्सरसाइज हुई थी। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन मैम, इन्होंने लॉन्च किया नेशन वाइड आपकी पूंजी आपका अधिकार कैंपेन, गुजरात में इसको लॉन्च किया गया। ये कैंपेन बेसिकली क्या है, जो अनक्लेम्ड फाइनेंशियल एसेट्स हैं उनकी सेटलमेंट के लिए स्कीम लॉन्च की गई। पैन इंडिया इसको लॉन्च किया गया, बट अभी ये कैंपेन चल रहा है अक्टूबर से दिसंबर तक, तो यहाँ पे अभी गुजरात में ये कैंपेन था, ठीक है। फिर US ओपन किसके द्वारा भी जीता गया, US ओपन हुआ था, ये टेनिस से रिलेटेड होता है, तो कार्लोस एल्क्रेज के द्वारा जीता गया था एंड ये इनका सेकंड टाइटल है, सेकंड टाइम से इन्होंने जीता। देन आ जाते हैं अवार्ड्स एंड रिकग्निशन पे, हम बात कर रहे हैं नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिमोन साकागुची, मैरी ई बर्नको एंड फ्रेड रेम्सडेल, इनके द्वारा ये नोबेल प्राइज जीता है फिजियोलॉजी में और मेडिसिन में, राइट। आप इनको देख सकते हैं एंड किस लिए, फॉर द डिस्कवरीज ऑफ द कंसर्निंग पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस, जो प्रिवेंट करते हैं इम्यून सिस्टम को फ्रॉम हार्मिंग द बॉडी, राइट। तो इनके लिए यहाँ पे इनको नोबेल प्राइज से सम्मानित करा गया। नेक्स्ट आ जाता है फिर इंडियन पीस मेकर्स, इनको अवार्ड किया गया फॉर डेडिकेटेड सर्विसेज बाय द यूनाइटेड नेशंस इन टर्म सिक्योरिटी फोर्सेज, राइट। एंड इसीलिए जो एक ये ऑयल रिच बॉर्डर रीजन है बिटवीन सुदान एंड साउथ सुदान, इनके लिए एंड इसीलिए यहाँ पे इंडिया के पीस मेकर्स को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशन पे। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, ये एक्सियोम 4 मिशन पे गए थे, राइट, जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे गया था, करेक्ट। एंड शुभांशु शुक्ला को अपॉइंट किया गया एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ विकसित भारत बिल्डथॉन। एम क्या रहेगा कि इस बच्चों को एंगेज किया जा सके फ्रॉम 6th से 12th क्लास, ताकि वो प्रोटोटाइप बना सकें, राइट, एंड अपने बिजनेसेस को फर्दर वो ले जा सके एंड उनके अंदर एक एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट यहाँ पे डेवलप करा जा सके। एंड इसी बिल्डथॉन के यहाँ पे शुभांशु शुक्ला जी को अपॉइंट किया गया एज द ब्रांड एम्बेसडर। ये इनिशिएटिव किसके द्वारा था, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा इस इनिशिएटिव को यहाँ पे लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट आ जाते हैं साइंस एंड टेक पर। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड का फास्ट पेट्रोल वेसल इंडियन कोस्ट गार्ड शिप अक्षर, इसको अभी ऑफिशियली कमीशन किया गया कराईकाल पुडुचेरी में। डायरेक्ट क्वेश्चन रहेगा स्टूडेंट्स, मार्क करेंगे। एंड ये सेकंड ऑफ द 8th क्लास रहेगा, या फिर हम बोले सेकंड ऑफ द 8th
अदम्य क्लास फास्ट पेट्रोल वेसल रहेगा। 60% इंडिजीनियस कंटेंट इसमें देखने को मिलेगा। 60% का मतलब हो गया ये मेक इन इंडिया के अंडर आता है। क्या क्राइटेरिया मेक इन इंडिया का? अगर 50% से ज्यादा इंडिजीनियस कंटेंट रहता है तब उसको मेक इन इंडिया के अंडर कंसिडर किया जाता है। यहाँ पे 60% इंडिजीनियस कंटेंट है, राइट। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा इसको बिल्ड किया गया है, कमीशन बाय इंडियन कोस्ट गार्ड, करेक्ट, टेक अ नोट ऑफ इट। फिर नेक्स्ट पे आते हैं स्पोर्ट्स पर। इंडिया ने यहाँ पे क्लेम करे 8 मेडल्स, या फिर हम इसको ऐसा समझो कि अभी ISSF जूनियर वर्ल्ड कप हुआ था न्यू दिल्ली में, ये देखने को मिला था। एंड 24 सितंबर से लेके 24 सितंबर से लेके 2 अक्टूबर तक ये हमें देखने को मिला था, जहां पे इंडिया की क्या पोजीशन थी मेडल टैली में। इंडिया ने मेडल टैली में फर्स्ट पोजीशन यहाँ पे सिक्योर करी, राइट, फर्स्ट पोजीशन सिक्योर करी, जहां पे इंडिया के 26 मेडल थे। 26 में से 8 गोल्ड मेडल थे इंडिया के, ठीक है, मार्क करेंगे। ये तो आपका, इससे जो पुराना एडिशन हुआ था वो कहां पर हुआ था? वो आपका जर्मनी में हुआ था, करेक्ट। फिर यहां पे आप देख सकते हैं मेडल टैली में इंडिया फर्स्ट पोजीशन पे विद टोटल 26 मेडल। नेक्स्ट आ जाते हैं, इंडिया ने होस्ट करा 12वां वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप, जो कि दिल्ली में हमें देखने को मिला था, राइट। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 27 सितंबर से 5 अक्टूबर तक हुआ था। ये 12th एडिशन है इस वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का, करेक्ट। एंड ये 12वां एडिशन है, तो इससे पहला जो एडिशन था 11th एडिशन था, वो कहां पर हुआ था? वो कोबे जापान में हमें देखने को मिला था, राइट, टेक अ नोट ऑफ दिस। यहीं पे अगर हम देखें मेडल टैली में किसने टॉप किया? ब्राजील के द्वारा टॉप किया गया विद 44 मेडल्स, एंड इंडिया की 10th पोजीशन रहेगी इन दिस मेडल टैली विद 22 मेडल्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेज पर आते हैं स्टूडेंट्स। PFRDA द पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, इन्होंने सेलिब्रेट किया NPS दिवस को टू स्ट्रेंथन द रिटायरमेंट सिक्योरिटी इन इंडिया। आई रिपीट, अभी रिसेंटली PFRDA ने सेलिब्रेट किया NPS दिवस को न्यू दिल्ली में, अंडर द थीम व्हाट? थीम रहेगी इंक्लूसिव पेंशन इनोवेटिव सॉल्यूशन स्ट्रेंथनिंग रिटायरमेंट सिक्योरिटी इन इंडिया, ये थीम रहेगी यहाँ पे। PFRDA के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज कराया गया, 1 अक्टूबर 2025 को ये ऑर्गेनाइज हुआ था, राइट, NPS दिवस। नेक्स्ट वर्ल्ड टीचर्स डे आते हैं, 5 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है। आप तो कहेंगे सर 5 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है CP राधाकृष्णन जी के बर्थ एनिवर्सरी पे, राइट। यहीं पे अगर हम देखें तो इंडिया में नेशनल टीचर्स डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 5 सितंबर को। एंड वर्ल्ड में टीचर डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 5 अक्टूबर को। यूनेस्को के द्वारा इसको ऑब्जर्व किया जाता है, एंड ये डे ऑब्जर्व किया जाता है ताकि टीचर्स का जो इंपॉर्टेंट रोल है एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए एंड फ्यूचर जनरेशन को शेप करने के लिए, ये डे, राइट। यहीं पे थीम याद रखेंगे, रिकास्टिंग टीचिंग एज अ कोलैबोरेटिव प्रोफेशन, ये यहाँ पे थीम रहेगी 2025 की। नेक्स्ट है वर्ल्ड सेरेब्रल पॉलिसी डे, 6 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है। ये डे ऑब्जर्व किया जाता है टू सेलिब्रेट द अचीवमेंट्स ऑफ इंडिविजुअल्स दैट आर लिविंग विद सेरेब्रल पॉलिसी। इसकी एक थीम रहेगी यूनिक एंड यूनाइटेड, पहली बार 2012 में इसको ऑब्जर्व किया गया था। फिर स्टेट न्यूज याद रखेंगे स्टूडेंट्स, यूनियन मिनिस्टर अमित शाह इनके द्वारा माझे घर योजना लॉन्च की गई है, माई होम स्कीम। इस स्कीम को बेसिकली कहां पे लॉन्च किया गया? गोवा में लॉन्च किया गया, गोवा के चीफ मिनिस्टर के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। एंड ये स्कीम क्या बोलती है, राइट, गोवा के चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत के द्वारा ये स्कीम लॉन्च की गई बेसिकली ताकि जो घर है, राइट, उसको यहाँ पे ग्रांट किया जा सके ओनरशिप राइट टू द रेजिडेंस। जो वहाँ पे लीगल रेजिडेंस है, या फिर बोले हाँ जो लीगल रेजिडेंस है वहाँ पे लोगों को लीगल राइट प्रोवाइड कराने के लिए ये लॉन्च किया गया। एंड विद इन 6 महीने उनको वो लीगल राइट प्रोवाइड कराया जाएगा अंडर दिस स्कीम, राइट, टेक अ नोट ऑफ दिस। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं कुछ रिविजन पार्ट पे, जिससे आपकी लर्निंग और स्ट्रॉन्ग होती हुई दिखेगी। Next students is our homework section and important questions students. We have discussed these questions, so let's test your knowledge. First question, 5th edition of the World Tea Conference, it was held where? Second question, tell me recently what is the rank of India in the Global Innovation Index and name that country that secured the first position also here. Third question, recently what is the fees of H1B visa for the new people and it will be starting from which date? Then fourth question, tell me recently if I ask you that who has been appointed as the next chairman of Coal India or PESB recommended whom as the next chairman of Coal India Limited. And the fifth question that is important is tell me who became the new BCCI president and who he will be succeeding. Name that individual also. So these are your homework questions students. I need to see maximum participation from you all. नेक्स्ट आ जाते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताओ जिन्होंने अभी एक MOU साइन किया विद ईश वैद बायोप्लांट्स वेंचर्स ऑन 4th August टू स्ट्रेंथन द कंजर्वेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स अलॉन्ग विद द ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट इन्वॉल्विंग ऑल इंडिया
इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एंड एम्स न्यू दिल्ली। तो मेंशन दैट ऑर्गेनाइजेशन, वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, वो है नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड। इंपॉर्टेंट है, टेक अ नोट ऑफ दिस। एंड यहीं पे हम देखेंगे मेडिसिनल प्लांट्स को ग्रो करने का काम किया जाएगा, प्रॉपर उसकी सप्लाई चेन मेंटेन की जाएगी ताकि जो आयुष रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं उसमें बनाने में कोई कमी ना आ सके। नेक्स्ट, एसएपी लैब्स इंडिया, इन्होंने एक एमओयू साइन किया किसके साथ, गति शक्ति विश्वविद्यालय के साथ, ताकि डिजिटली अपस्किल किया जा सके प्रोफेशनल्स को जो कि लॉजिस्टिक्स सेक्टर्स में है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में है, राइट। टेक अ नोट ऑफ दिस, इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो गति विश्वविद्यालय के साथ ये एमओयू यहाँ पे साइन किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, इंडिया ने साइन किया एक प्रोटोकॉल किसके साथ, ये एमओयू, ये प्रोटोकॉल साइन किया गया विद, ये रशिया के साथ ये प्रोटोकॉल साइन किया गया है ताकि सेक्टर्स जैसे एल्यूमिनियम, फर्टिलाइजर्स, रेल ट्रांसपोर्ट, माइनिंग, राइट, इनके ऊपर काम किया जा सके। एंड ये न्यू दिल्ली में साइन किया गया था ये प्रोटोकॉल ड्यूरिंग द 11th सेशन ऑफ द वर्किंग ग्रुप ऑन मॉडर्नाइजेशन एंड इंडस्ट्रियल कॉपरेशन। नेक्स्ट पे आते हैं, अभी अटल इनोवेशन मिशन जो कि नीति आयोग के अंडर आते हैं, इन्होंने अभी एक स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट साइन किया है किसके साथ, तो ये स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट साइन किया गया डिजिटल इंडिया भाषिणी डिवीजन के साथ ताकि वर्नाकुलर इनोवेशन को प्रमोट किया जा सके। एंड जो इतनी लैंग्वेजेस है इंडिया में, राइट, उनका एक इनोवेटिव इकोसिस्टम बना के इंक्लूसिविटी के ऊपर काम किया जा सके, मतलब यहाँ पे सभी लैंग्वेजेस के साथ कोई कम्युनिकेशन बैरियर ना हो, राइट। और भाषिणी क्या काम कर रहा है, भाषिणी भी यही काम कर रहा है, वो मल्टीलिंगुअल सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल पे ट्रेंड है जहाँ पे कई सारी इंडियन लैंग्वेजेस को ट्रेन किया गया है एंड कम्युनिकेशन एक इशू यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। नेक्स्ट आ जाते हैं, उस टेलीकॉम कंपनी को आइडेंटिफाई करो जिन्होंने कोलैबोरेट किया विद ग्लोबल टेक जायंट्स एरिक्सन इंडिया, क्वालकॉम टेक्नोलॉजीज एंड सिस्को सिस्टम्स एंड नोकिया सॉल्यूशंस के साथ ताकि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को स्ट्रेंथन किया जा सके, स्किलिंग इकोसिस्टम को प्रमोट किया जा सके इंडिया में। तो कौन सी है वो टेलीकॉम कंपनी, वो है बीएसएनएल, भारत संचार निगम लिमिटेड। नेक्स्ट, अभी अगस्त के महीने में डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड जो कि है DPIIT, इनके द्वारा अभी रिसेंटली एक एमओयू साइन किया गया किसके साथ, जेप्टो के साथ। जेप्टो क्या है, ये एक ऑनलाइन डिलीवरी प्लेटफॉर्म है, राइट। एंड इन्होंने दोनों ने मिलकर लॉन्च किया जेप्टो नोवा को। ये एक इनोवेशन चैलेंज है जहां पे जो अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स रहेंगे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, उनको यहाँ पे मेंटर किया जाएगा, उनको ग्रो किया जाएगा एंड उनको हेल्प किया जाएगा कि कैसे वो इस इंडस्ट्री में सस्टेन कर सकते हैं। अच्छा इनिशिएटिव है, मार्क करके चलेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, आइडेंटिफाई द रिसर्च सेंटर, जिन्होंने अभी एक एमओयू साइन किया एनएलसी इंडिया लिमिटेड के साथ फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ रेयर अर्थ मटेरियल्स, रेयर अर्थ एलिमेंट्स फ्लाई ऐश से। देखो फ्लाई ऐश क्या होता है, ये बाय प्रोडक्ट होता है आपका, जब भी हम कोई थर्मल पावर को जनरेट करते हैं तो जो गैसेस निकलती हैं, राइट, कोयले को जलाते हैं तो जो काला काला गैसेस होती हैं वो आपका फ्लाई ऐश होता है। तो उसको उसके थ्रू उसको हम कैप्चर करके उसमें से रेयर अर्थ एलिमेंट्स को, रेयर अर्थ मिनरल्स को हम एक्सट्रैक्ट करने का काम करेंगे। एंड ये किसके द्वारा करा जाएगा, राइट, ये पूछा गया है। तो अभी रिसर्च सेंटर बात करो, वो है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर BARC। इन्होंने एनएलसी इंडिया लिमिटेड के साथ एमओयू साइन किया ताकि इन रेयर अर्थ एलिमेंट्स को हम एक्सट्रैक्ट कर सकें फ्लाई ऐश से। नेक्स्ट, मेंशन दैट इंस्टीट्यूट, जिन्होंने अभी UIDAI के साथ अभी एक 5 साल का अम्ब्रेला अग्रीमेंट साइन किया अगस्त के महीने में टू कोलैबोरेट ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट फॉर ब्लास्टिंग द सिक्योरिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ आधार कार्ड। आधार कार्ड 12 डिजिट का, ये 12 डिजिट होते हैं आधार कार्ड में, हर इंडिविजुअल का ये अलग होता है। तो उस इंस्टीट्यूट का नाम बताओ जिन्होंने UIDAI के साथ ये 5 साल का अग्रीमेंट साइन किया, वो है कौन सा इंस्टीट्यूट, ये पूछा गया आपसे। तो वो है ISI, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के साथ ये अग्रीमेंट साइन किया गया। अगर हम आधार कार्ड की बात करें तो आधार कार्ड को लॉन्च किया गया था जनवरी में 2009 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट, मेंशन दैट ऑर्गेनाइजेशन, जिन्होंने 3 साल का एमओयू साइन किया माय भारत के साथ अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स इन अगस्त टू प्रमोट यूथ लीडरशिप डेवलपमेंट इन इंडिया। तो कौन सी है वो है सोल फाउंडेशन, स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप फाउंडेशन। यहाँ पे हम देखेंगे 1 लाख यूथ को जो कि 18 से 29 साल के बीच में है, इनको यहाँ पे ट्रेन किया जाएगा, उनको यहाँ पे यंग लीडर्स बनाने का काम किया जाएगा, जहाँ पे हम सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, डिजिटल लिटरेसी, फाइनेंशियल लिटरेसी, इनके ऊपर काम होता हुआ देखेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट, इन्होंने कोलैबोरेट किया बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंसेज के साथ अगस्त के महीने में ताकि एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म को एस्टेब्लिश किया जा सके जो शोकेस करेगा इंडिया की साइंटिफिक एंड कल्चरल अचीवमेंट्स को। तो वो कौन सा इंस्टीट्यूट है, वो है इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स। इन्होंने बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंसेज के साथ यहाँ पे एमओयू साइन किया एंड ये एमओयू फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव है इंडिया में जो कि एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म बनाएगा जहाँ पे इंडिया की साइंटिफिक एंड कल्चरल इनिशिएटिव्स को प्रमोट किया जाएगा, उनको शोकेस किया जाएगा नेशनल एंड ग्लोबल ऑडियंस को। नेक्स्ट, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इन्होंने कोलैबोरेट किया
क्या लॉन्च करने के लिए इन्होंने कोलैबोरेट किया विद, सबसे पहले कोलैबोरेट किया विद सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग के साथ टू लॉन्च ई सुश्रुत ई @क्लिनिक, जो कि एक लाइट वेट क्लाउड बेस्ड हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है फॉर ओपी क्लाइंट्स, आउट पेशेंट क्लाइंट्स के लिए, डायरेक्ट याद रखेंगे। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई दैट इंस्टीट्यूट जिन्होंने एक लाइसेंसिंग अग्रीमेंट साइन किया है वर्थ 1 करोड़ रुपीज विद इंदिरा क्वांटम टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड टू ट्रांसफर इंडिया का पहला इंडिजीनियसली डेवलप्ड सिलिकॉन फोटोनिक बेस्ड हाई स्पीड क्वांटम रैंडम नंबर जनरेटर टेक्नोलॉजी को टू इंडस्ट्री फॉर कमर्शियल डिप्लॉयमेंट। तो उस आइडेंटिफाई करो उस इंस्टीट्यूट को, तो वो कौन सा इंस्टीट्यूट है, वो है IIT मद्रास, राइट, टेक अ नोट ऑफ दिस। एंड 1 करोड़ रुपए का ये लाइसेंसिंग अग्रीमेंट रहेगा इंदिरा क्वांटम टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के साथ। नेक्स्ट, मेंशन द पार्लियामेंट्री फोर्सेस, मेंशन दैट पैरामिलिट्री फोर्सेस जिन्होंने भी एक MOU साइन किया IIT मणिपुर के साथ इन अगस्त, ताकि प्रमोट किया जा सके ड्रोन टेक्नोलॉजी को फॉर डिफेंस एंड सिक्योरिटी। तो वो है असम राइफल्स, राइट, ये वो पैरामिलिट्री फोर्सेस है जिन्होंने MOU साइन किया है IIT मणिपुर के साथ। नेक्स्ट आ जाते हैं, आइडेंटिफाई दैट इंडियन इंस्टीट्यूट जिन्होंने कोलैबोरेट किया फेडेक्स के साथ ताकि लॉन्च किया जा सके फेडेक्स स्मार्ट सेंटर एट इट्स कैंपस इन अगस्त, जो डेवलप करेगा AI ड्रिवन लॉजिस्टिक सॉल्यूशंस को, वो है IIT मद्रास। टेक अ नोट ऑफ दिस, AI बेस्ड लॉजिस्टिक सॉल्यूशंस को डेवलप करने का यहाँ पे काम किया जाएगा। एंड इवन फेडेक्स, इनके द्वारा यहाँ पे $5 मिलियन, जो कि मोटा मोटा हो जाते हैं 44 करोड़ रुपीज यहाँ पे दिए गए फॉर द रिसर्च यहाँ पर। नेक्स्ट, किस अमेरिकन सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइडर ने कोलैबोरेट किया UIDAI के साथ टू एनेबल आधार बेस्ड कस्टमर वेरिफिकेशन, वो है स्टारलिंक सैटेलाइट। नेक्स्ट, अभी अगस्त के महीने में डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी इन्होंने अभी पार्टनर किया किन के साथ, एंड यंग लीडर्स फॉर एक्टिव सिटीजनशिप के साथ टू लॉन्च ब्रेकिंग बैरियर्स फेलोशिप। ये ब्रेकिंग बैरियर्स फेलोशिप यहाँ पे लॉन्च किया है। तो डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी इन्होंने निपमैन फाउंडेशन के साथ यहाँ पे पार्टनर किया है एंड यंग लीडर्स एक्टिव सिटीजन्स के साथ पार्टनर किया ताकि ब्रेकिंग बैरियर फेलोशिप यहाँ पे लॉन्च की जा सके। ये बेसिकली फेलोशिप एक आपका एक प्रोग्राम है जो डिजाइन किया गया है यंग प्रोफेशनल्स के लिए, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के ऑफिस में काम करते हैं, जो क्या करेंगे कि जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज हैं उनके राइट्स के ऊपर काम करेंगे, राइट। उनके लिए हम क्या कैसे उनकी लाइफ को ईजी बना सकते हैं, राइट, क्या उनको बेटर सुविधा प्रोवाइड करा सकते हैं, तो उनके लिए यहाँ पे ये काम किया जाएगा। नेक्स्ट, मेंशन द ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने एक 5 साल का B2B बिजनेस टू बिजनेस एग्रीमेंट साइन किया ब्रह्मपुत्रा वैली फर्टिलाइजर्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ एट सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल इन अगस्त, जो सप्लाई करेगा असेंशियल फर्टिलाइजर्स को। तो वो है नेशनल सीड सेंटर ऑफ भूटान, राइट। यहाँ ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने 5 साल का B2B बिजनेस टू बिजनेस एग्रीमेंट साइन किया। इससे क्या होगा, भूटान में जो फूड सिक्योरिटी है ना उसके ऊपर काम किया जाएगा एंड वहां पे फूड सिक्योरिटी इंक्रीज होती हुई दिखेगी। जो एग्रीकल्चर गुड्स हैं, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, चाहे वो आपका एग्रीकल्चर में फार्मिंग से रिलेटेड हो या फिर कोई ग्रेन्स हो जिससे वो उनकी फूड सिक्योरिटी पे इंपैक्ट ना आए, वो एंश्योर यहाँ पे करा जाएगा। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द टेलीकॉम कंपनी जिन्होंने अभी एक MOU साइन किया है डाउ डिवीजन के साथ ऑफ इंडियन आर्मी, जो एनहांस करेगा डिजिटल एंड मोबाइल कनेक्टिविटी इन द फॉरवर्ड एरियाज ऑफ द डिबांग वैली एंड अंजॉर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो वो कौन सी टेलीकॉम कंपनी है, वो है भारती एयरटेल। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने पार्टनर किया डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के साथ to enable citizens in rural and semi-urban areas to invest in mutual funds through India Post during the 30th Foundation Day celebration in Maharashtra। तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने, वो है एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द सेंट्रल लैंड पुलिस फोर्स जिन्होंने राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के साथ अभी एक MOU साइन किया अगस्त के महीने में टू फॉस्टर कॉपरेशन इन ट्रेनिंग रिसर्च एंड एकेडमिक डेवलपमेंट रिलेटेड टू नेशनल सिक्योरिटी। तो वो है शस्त्र सीमा बल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क करेंगे। इसके बाद आ जाते हैं स्टूडेंट्स डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, इन्होंने अभी रिसेंटली एक लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया है किसके साथ, यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ, जहां पे फूड सिक्योरिटी के ऊपर इंडिया हेल्प करेगा एंड एक्सपेक्टेड है आने वाले 5 सालों में हम 2 मिलियन मैट्रिक टन्स ऑफ राइस को एक्सपोर्ट करेंगे, जहां पे हंगर ज्यादा है, जहां पे जो फूड सिक्योरिटी है वो प्रोवाइड कराने के लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड। एंड वासुदेव कुटुंबकम के अंडर ये सब किया जाएगा। वासुदेव कुटुंबकम क्या है, द वर्ल्ड इज वन फैमिली, जो इंडिया का एक ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन आउटलुक है। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है इंडिया का पहला लर्निंग एक्सेलरेटर अगस्त के महीने में इन कोलैबोरेशन विद IIT मद्रास, जिसका एम रहेगा टू एम्पावर द एजुकेटर्स एंड स्टूडेंट्स विद AI टूल्स एंड ट्रेनिंग। तो ओपन AI ने यहाँ पे किया है एंड इन्होंने बेसिकली IIT मद्रास को इवन 4.5 करोड़ रुपीस भी दिए हैं, जो कि मोटा मोटा
$1,000 होते हैं। इनका एम रहेगा कि एआई का क्या इंपैक्ट रहता है टीचिंग सेक्टर में, राइट? क्या इंपैक्ट रहता है कि हम जो एजुकेशन प्रोवाइड कराएंगे बच्चों को उसका क्या नेगेटिव पॉजिटिव इंपैक्ट रहेगा, राइट? क्या लर्निंग आउटकम्स रहेंगी, क्या टीचिंग प्रैक्टिसेस यहाँ रहेंगी, क्या कॉग्निशन पे इफेक्ट रहेगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पे रिसर्च करने का काम किया जाएगा। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई दैट ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर के साथ एक एमओयू साइन किया टू इंप्रूव द डिलीवरी ऑफ पेंशन, हेल्थ केयर, रीसेटलमेंट एंड वेलफेयर सर्विसेज फॉर ओवर 63 लाख मिलिट्री वेटरन्स एंड देयर डिपार्टमेंट्स। तो आइडेंटिफाई दैट ऑर्गेनाइजेशन वो है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंट है, मार्क करके चलेंगे। नेक्स्ट, उस फॉरम का नाम बताओ जिन्होंने कोलैबोरेट किया विद इंडिया एआई मिशन अंडर द मिलिट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी टू लॉन्च इंडिया एआई इन एक्शन। ये एक पॉडकास्ट सीरीज रहेगी, इंडिया एआई इन एक्शन, राइट? ये पॉडकास्ट बेसिकली क्या होता है, जब दो वीडियो है, यहाँ पे दो इंडिविजुअल्स बैठ के बात करते हैं, दे आर डिस्कसिंग अ सर्टेन टॉपिक। यहाँ पे वो टॉपिक रहेगा कि एआई का क्या इंपैक्ट रहने वाला है इंडियन स्टार्टअप्स पे, कैसे वो वेरियस सेक्टर्स को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, क्या उनका इनपुट रहेगा, राइट? क्या चैलेंजेस फेस करने को मिलेंगे एंड एवरीथिंग। तो ये एक पूरी इंडिया एआई इन एक्शन, ये एक पॉडकास्ट सीरीज रहेगी। तो मेंशन दैट फॉरम जिन्होंने ये लॉन्च किया अलॉन्ग विद इंडिया एआई मिशन, वो है स्टार्टअप पॉलिसी फॉरम के साथ मिलकर ये लॉन्च किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं सेटकॉम इंडस्ट्री एसोसिएशन इंडिया। इन्होंने एक एमओयू साइन किया है इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ द फिलीपींस के साथ, ताकि जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेस एंड सैटेलाइट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज है इनमें कॉपरेशन को बढ़ावा दिया जा सके, आईओटी डिवाइसेस के ऊपर काम किया जा सके एंड इवन सेमीकंडक्टर्स के ऊपर यहाँ पे काम किया जा सके। नेक्स्ट, एचसीएल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, इन्होंने कोलैबोरेट किया अभी पियर्सन इंडिया एंड MEITY स्टार्टअप हब के साथ एंड लॉन्च किया अराइज फॉर यू। ये एक इनिशिएटिव है दैट इज एन इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप चैलेंज, जिसके अंदर जो एम रहेगा एंटरप्रेन्योरशियल स्पिरिट को, एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम को, स्टार्टअप इकोसिस्टम को ग्रो करने का काम किया जाएगा, प्रमोट करने का काम किया जाएगा फॉर द यूथ ऑफ इंडिया।